Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narang Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Nasta Prayeshu Avadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistike. Continuing Srimad Bhagavatam, this is 4th canto, chapter 22. Prithu Maharaj meeting with the Kumaras. Reading this morning, text number 19. Sangama Sangama Khalu Khalu Sadhunam Sadhunam Ubayesam Ubayesam Cha Samatta Samatta Yat Sambhasana Samprashna Sarvesam Vitanoti Sham Shangama Khalo Sadhunam Shangama Khalo Sadhunam Ubayesam Cha Samata Ubayasam Cha Samataha Yat Sambhasana Samprashnaha Yat Sambhasana Samprashna Sarvesam Vitanotisam Sarvesam Vitanotisam Shangama Khalo Sadhunam Ubayasam Cha Samataha Yat Sambhasana Samprashnaha Sarvesam Vitanotisam Hey, ladies, can you read? Try. Hey, lady. Okay.
Samsarataha Asma Samkrishnaha. What meanings? Sangamaha, association. Khalu, certainly. Sadhunam, of devotees. Ubhayasam, for both. Cha, also. Samataha, conclusive. Yat, which. Sambhasana, discussion. Samprasanaha, question and answer. Sarvesam, of all. Vitanoti, expands. Sham, real happiness. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. When there is a congregation of devotees, their discussions, questions and answers become conclusive to both the speaker and the audience. Thus, such a meeting is beneficial for everyone's real happiness. Purport, Prabhupada, hearing discussions among the devotees is the only means to receive the powerful message of the Supreme Personality of Godhead. For instance, Bhagavad Gita has been well known all over the world for a very long time, especially in the Western world. But because the subject matter was not discussed by devotees, there was no effect. Not a single person in the West became Krishna conscious before the Krishna consciousness movement was founded. But when the same Bhagavad Gita was presented as it is through the disciplic succession, the effect of spiritual realization was immediately manifested. Sanat Kumar, one of the Kumaras, informed Prithu Maharaj that his meeting with the Kumaras benefited not only Maharaj Prithu, but the Kumaras as well. When Narada Muni questioned Lord Brahma about the Supreme Personality of Godhead, Lord Brahma thanked Narada Muni for giving him a chance to speak about the Supreme Lord. Therefore, questions put by a saintly person to another saintly person about the Supreme Personality of Godhead or about the ultimate goal of life surcharge everything spiritually. Whoever takes advantage of such discussions is benefited both in this life and in the next. Dawar Ubhayasam can be described in many ways. Generally, there are two classes of men, the materialist and the transcendentalist. By hearing discussions between devotees, both the materialist and the transcendentalist are benefited. The materialist is benefited by association with devotees because his life then becomes regulated so that his chance of becoming a devotee or making the present life successful for understanding the real position of the living entity is increased. When one takes advantage of this opportunity, he is assured of a human form of life in the next birth, or he may be liberated completely and go back home, back to Godhead. The conclusion is that if one participates in a discussion of devotees, he is both materially and spiritually benefited. The speaker and the audience are both benefited, and the karmis and the jnanis are benefited. The discussion of spiritual matters amongst devotees is beneficial for everyone without exception. Consequently, the Kumaras admitted that not only was the king benefited by such a meeting, but the Kumaras were as well. श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा प्रदत्त पदार्थ
साधु मानकर संगलाप ही भगवान के शक्तिशाली संवाद प्राप्त हेबार एकमात्र उपाय। उदाहरण स्वरूप बहु दीर्घ काल श्रीमद् भगवत गीता समग्र जगत रे विशेषकर पाश्चात्य जगत रे परिचित, किंतु भगवत गीतार विषय वस्तु भक्त वा वैष्णव मान द्वारा आलोचित न होइथिबा हेतु फलप्रद होई नथिला। किंतु कृष्ण चेतना आंदोलन प्रतिष्ठित हेबा पूर्व पाश्चात्य जगत रे कौन एक व्यक्ति कृष्ण चेतनशील होई नथिले। जेतेबेले सेही भगवत गीता यथानुरूप भावे प्रामाणिक परंपरा जरिया प्रकाश करागला, सेतेबेले संगे संगे चिदानुभूति लाभर सुजोग मिलिला। कुमार मान मध्य अन्यतम सनत कुमार पृथुमाराज कहले जे ताहांकर पृथुंकर कुमारानंद सब भेट केवल जे पृथुमाराज पक्षरे कल्याणकर ताहा नुहे, कुमारानंद पक्षरे मध्य कल्याणप्रद अटे। जेतेबेले नारद मुनि ब्रह्मा को भगवान सम्बन्धे जिज्ञासा कले, सेतेबेले श्री ब्रह्मा जी नारद मुनि को धन्यवाद अर्पण करे, कारण से नारद मुनि ताहांको ब्रह्मा को भगवान सम्बन्धे कहवा निमित्त एक सुजोग प्रदान करे। सेतिपाई जने साधु अनेक साधु को भगवत संबंधी किंबा जीवन अंतिम लक्ष्य संबंधी प्रश्न कले ता समर्थन पाई परमात्मा रे गुण कल्याण होता है। जो व्यक्ति एक प्रकार संग्राम रे अंशग्रहण परिवार सुजोग पांती से यह तथा परकाल रे मध्य सुफल लाभ करिथांती। ए श्लोकरे व्यवहृत उभय शब्द अनेक प्रकार व्याख्या कर दे पारे। साधारणतः दुई श्रेणीर मानव अछंती, भौतिकवादी और परमात्मिकवादी। साधु मानकर संगलाप श्रवण करे उभय भौतिकवादी और परमात्मिकवादी व्यक्ति लाभवान होती। भौतिकवादी व्यक्ति साधु मानन को साधु संगलु लाभ पाती। साधु कथा शुणिले ताहांकर जीवन धारा नियंत्रण हुए, फल से एक भक्त हेबार सुजोग पाती। अन्य कथारे साधु संग को निज तत्व साधु संगलु निज तत्व जानी जन्म सफल करने निमित्त प्रयत्नशील होती। जीवन स्वरूप है कृष्ण में नित्य दास, यह हूँ जीव तत्व। व्यक्ति साधु संगे सुजोग लाभ करे निश्चित भाव पर जन्म मानव जन्म लाभ करेंगे किंबा यही जन्म मुक्त हो भगवत धाम को फेर दे पारे। सिद्धांत होची यदि कौन व्यक्ति साधु मानव संगलाप में अंशग्रहण करती से भौतिक और पारमार्थिक उभय उपकृत होती। श्रोता और वक्ता उभय लाभवान होती। कर्मी और ज्ञानी मध्य उपकृत होती। साधु मानकर भगवत संबंधी आलाप प्रत्येक पक्षरे कल्याण कर परिणामतः कुमार यह स्वीकार करे जे केवल के राजा पृथ्वी एक प्रकार भेटरे उपकृत हेबे हेले तानु रे कुमार मध्य यथेष्ट लाभ होती। जय गुरु महाराज प्रभुपाद की। So this is a Sanat Kumar continuing to speak to Prithu Maharaj. Sanat Kumar Srila Prithu Maharaj को यही भावरे कहउछन्ति। So to the question, when Prithu Maharaj raised this question to Sanat Kumar, what is the ultimate goal of life? So to that, so Sanat Kumar is answering that question. Prithu Maharaj को संत को प्रश्न करे ए जीवन अंतिम उद्देश्य कौन सही प्रसंग है सनत कुमार ये समस्त विषय पूछते। So therefore, two transcendentalists, the dialogue between two great the servants of the Lord, of the Supreme Lord, in fact Prithu Maharaj is an avatar of the Lord himself, but acting as in this capacity. So therefore this dialogue has a very, very deep meaning. दिव्य जीवन मार्ग रे अग्रगत करवा स्वतः रक्तम मध्यरे जो आलाप हुए से आलाप वर्तमान पृथु महाराज जो संत मार्ग मध्यरे होछि। पृथु महाराज संत मार्ग जो प्रश्न करूछन्ति एवं संत मार्ग से प्रश्न मार्ग जो उत्तर दउछन्ति से उत्तर प्रकृतरे जीव पक्षरे बड़ा मंगल। So you have to realize that such meeting is not an ordinary meeting. एक प्रकार समागम साधारण समागम नुहे। In fact, it is only by the blessings, by the arrangement of the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna. भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण का व्यवस्था अनुसार ये प्रकार समागम संयुक्त होता। So, just like when the sages in the Misharana
when the assembled sages, the thousands of sages assembled, but when they found that Sutta Goswami was among them, but the assembled sages, they expressed that by the will of providence, it is by the will of providence that they were given this facility to meet as an exalted personality. ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଧିର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଭଗବତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେମାନେ ଆଜି ମିଳିତ ହୋଇଛୁ. So in this way, the sages, assembled sages, were extremely grateful that by the mercy of the Supreme Lord, that they have been allowed to meet such a exalted personality. ଏଭଳି ସମ୍ମେଳନରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାଧୁମାନେ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେତୁ କୃତ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତି. In the same way, when Vidura was traveling around the planet, then when he came to Haridwar in the foothills of the Himalayas, he met Maitreya Muni. ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଦୁର ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ. Because two saintly personalities meeting and having dialogue, questions and answers. So these are all beneficial, not only for themselves, but for the millions of people that will listen to their dialogue. ଏଇଭଳି ଦୁଇ ଜଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଳାପ ବା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳଜନକ ହେବା ସହିତ ଜଗତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ. Similarly, when Parikshit Maharaj was very unfairly cursed by a little uneducated Brahmana, that when he was preparing for his death, then Sukadeva Goswami came. So the dialogue between Sukadeva Goswami and this Parikshit Maharaj, actually that forms the whole, there's a spectrum of Srimad Bhagavatam. In this way, it was not only beneficial for Parikshit Maharaj as well as the speaker Sukadeva Goswami, but for many sincere souls in this universe, in the past, in the present, and in the future. I mean, eternally is beneficial. ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏଭଳି ସାଧୁ ସଂଘର ଆଲୋକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି. ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ବା ବିଧିର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଏକ ବଡ଼ ଅସହନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରହ୍ମୋପଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଆସିକି ବସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ. ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂଳାପ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ କାଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭଗବତ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କ ସେଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା. So in a similar manner, we can also express that Prabhupada, our Guru Maharaj, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, because he was sent by Lord Krishna in order to broadcast the glories of Sankirtan. So because of this arrangement, we are all fortunate to come to his mission, to his movement called ISKCON, International Society for Krishna Consciousness. So because of the Lord Krishna's arrangement and our Guru Maharaj Srila Prabhupada's blessings, now we are, all of us actually, and for generations to come, were given a chance or a facility how to engage ourselves in the service of the Lord. So therefore, this is not an ordinary thing. ସାଧୁ ସଂଗମ ଫଳରେ ଜଗତରେ ଯାହା ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଉଦାହରଣ ଶ୍ରୀପାଦ ମହାରାଜ ସେ ସମୟ କହିବା ପରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସମାଜରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ବଶତଃ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଶତଃ, ଶିଳ ଗୌପାଳଜୀ ମହାରାଜ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯିବା ଫଳରେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯିବା ଫଳରେ
जो भली अवस्था सृष्टि होइछि से अवस्थार सुजोग समस्त कृषिवासी पाउछन्ति समस्त कल्याण साधन होछि एवं तापर मध्य आज आमे समस्त एखाने समवेत होइछे सेमान मध्य समस्त द्रौपदी महाराज कृष्ण कीर्तन वार्ता जहाँ समग्र पृथ्वी को उच्छ्वसित भाव संतोष प्रदान करछि कल्याण प्रदान करछि तार सुजोग एवं तार जो लाभ क्षेत्र हेछि आमे मध्य आज आलोचना मध्य सेतु किछि ग्रहण करछि. So we are all wandering in different parts of this planet, all of us. I was wandering in America, and some might be wandering in the forest, some might be wandering in some fields, and aimlessly. We're all of us were like that before we came to Hare Krishna mission. वर्तमान जेते जीवन जगत आछन्ति समस्त भ्रमण करछन्ति केतक अमेरिका भ्रमण करछन्ति केतक बहु देश रे भ्रमण करछन्ति केतक मते प्रांत रे पहाड़ पर्वत पाद देश रे एभली भाव समस्त भ्रमण करछन्ति किंतु एही भ्रमण रो सुजोग आसुछि जेतबेले साधु मान सहित माने मिलित होछन्ति. And our Gaur Govinda Maharaj, I heard that he was going to the Himalayas, that he and some of his friends were searching for a spiritual teacher, master, wandering in the Himalayas, trying to find someone. And but then we heard that, but he could not find. He was not satisfied. Then when we came to Vrindavan, then we met Prabhupada. He found out that yes, here is that personality that I was looking for, Maharaj was looking for in Prabhupada. He met. Then he became Prabhupada's servant. আমার জীবনে আর এক বাস্তব ঘটনার উদাহরণ দেওয়া পাই যে মহারাজ বলছেন যে আমার পরমানন্দ গুরুদেব শ্রী গৌরবন্দ গোস্বামী মধ্য এই সাধু সংঘ নিমিত্ত সমগ্র পৃথিবীরে ভ্রমণ করতে এইভাবে ভ্রমণ করবো সে মতো হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত যাইଥିଲେ কিন্তু সে কৌশি স্থাନରେ তাଙ୍କର जो ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯାହା ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ ତାହା ପାଇପାରୁନଥିଲେ ତାହା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କଲେ. And I was studying in America. I was studying science, and then I found Prabhupada in America. श्रीपाद महाराज मते ताଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ନିକଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ विज्ञान जन उन्नत छात्र भाव विज्ञान अध्यापन करथवा जड़े छात्र भाव से अमेरिका भ्रमण करथला बेले मध्य तांकर मन संतोष हे नथला किंतु जेतबे श्री प्रभुपाद महाराज से दर्शन करे तांकर से समस्त अन्वेषण और जिज्ञासा परिपूर्ण होला. So Prabhupada told me that if you also become like an ordinary scientist, then what good is that your study? So if you do not become a servant of Krishna, if you do not surrender to the Supreme Lord, then what good is your study? So he was telling me very strongly. जेतबे श्रील प्रभुपाद महाराज श्रीपाद महाराज को देखिले सेतबे से कहले पृथ्वी रे अनेक वैज्ञानिक अछंती तुमे मध्य समान परिजन वैज्ञानिक को चेष्टा करछ किंतु जेते बड़ा वैज्ञानिक हेले मध्य तुमे विशेष किछि पाई पारिबो नाही जदी तुमे भगवान कृष्ण को पदार्थ में निज को समर्पण न कर तार तुम जीवन जो मान एवं गौरव रहिछि ता प्रकाश को होई पारिबो नाही. And as you grow a little older, as you become more experienced, as you are growing up in life, in this journey, then you begin to realize that such meeting was actually an ordinary thing. It was actually arranged by the mercy, by the inconceivable mercy of the Supreme Lord Sri Krishna. जीवन में जो माने चरम उद्देश्य साधन करबा पई पृथ्वी पृष्ठ भ्रमण करूछन्ती सेमाने अवश्य बुझी पाइबे जे साधु मान सहित समित हेले जीवन केते गौरव होई पारे. So then we have to also look ourselves internally. In other words, we must purify, we must cleanse the impurities in our heart. I think that is the foremost qualification necessary for a disciple or for a student in Krishna consciousness. कृष्ण चेतना मार्ग रे निजे एई भଳି भाବରେ अन्वेषण କରୁଥିବା भक्तମାନଙ୍କ ପାଇଁ साधु संग बा साधु ମାନଙ୍କ सहित मिलित होइछि निज हृदय जो सब महिला जो सब दुर्बलता रहिछि ताकू यदि दूर କରିବା ପାଇଁ प्रचेष्टा करा जाई पारे ताहे ताहा जीवनर सबठारु बड़ उद्यम है.
So this actually forms the qualification. The qualification of a student is that, by this process of cleansing, this is sadhana. Let's say we following the rules and the regulations and following the spiritual programs. So this is called our discipline. So these are all process of purifying or purification our this contaminated mind and heart. So that way, when it becomes cleansed, then one will experience that happiness, and also one will make progress, that rapid progress in this journey of spiritual life. साधु दर्शन है आम जीवन में जो संस्कार आरंभ हुए, जो प्रकार साधना साधना आरंभ हुए, एवं जो प्रकार माने भक्ति मार्ग रे गति करिवा पाई भक्तिमय जीवन भक्ति जागरण करबा आरंभ करता फलरे जीवन परिष्कार होवा संगे संगे भक्ति मार्ग रे अग्रगति करिया पाई जो सब प्रारंभिक उपलब्धि अछि नाम जवळे एवं धीरे धीरे जीव भक्ति मार्ग रे अग्रगति करे. So therefore, each one of us, either young and old, and each one of us, we are all servants, and so we have to inquire whether am I doing my cleansing process, whether I am free from false ego, or whether there are so many impurities coming in my heart or in my mind, whether this cleansing process is making progress or not. So this has to be inquired every minute, every moment. सम्मेलन बा साधु संगम बा साधु दर्शन फलरे आमे जतले भक्ति मार्ग रे अग्रगति करिया पई किछि करूछु सेतबेले निज कामे प्रश्न करिवार कथा जे मन मोर मन मध्यरे मो हृदय मध्यरे थिबा गर्व दम्भ अधिक अहंकार ए सब धीरे धीरे दूरीभूत होउछि कि नाही निजको अनुधान जदि आमे करिबो ताहे हमर भक्ति जागरण सहित से प्रकार अनुधान सहित आमे प्रकृतरे क्रमवती मार्ग रे अग्रगति करि पाइबो. So there lies the secret, it's an open secret of becoming very absorbed in the service of Krishna or in Krishna consciousness. जीवन रे अग्रगति करिया पाई एक रहस्य बोली बोध होते मध्य ए रहस्य विशेष भाव रे हम समस्त अजଣା नुहे तेणु एही रहस्यमय मार्ग रे बा उपलब्धि मार्ग रे अग्रगति करिया पाई समस्त चेष्टा करा उचित एवं ए रहस्य उन्मोचित हेले जीवन ही परिपूर्ण होबो. So when those impurities still in my mind or in my heart, then the symptoms will be that I'll be interested in finding fault with others, that I'll be interested in criticizing others, and I'll be so much because false ego will become so big that I think that I am the best devotee. I am so that type of ahankar will become so big that that will be the cause of destruction. एभली भागरे आमे जतले अग्रगति करि पारिबा निजको अनुध्यान करि पारिबा सेतले हम भितर जो दोष दर्शन करिवार प्रवृत्ति रहिछि अन्य दोष हम दर्शन करू निजको अन्य ठामे जो बड़ होली भाबो अन्य माने हम नाम जो भाबती ए जो दोष ए सब को उद्धार महिला एवं ए सब को प्रतिदिन अनुध्यान करि जति जण चालिबो ताहे ताको निश्चय अनति विलंब करे निश्चय को उन्नत स्थिति आत्मचेतना दृष्टि मिलियो. So here, in this connection, like Sanat Kumar, a great advanced transcendentalist, so he is expressing great joy and happiness that Prithu Maharaj, a great exalted personality, was asking him this question. And so so the two personalities, great personalities, Sanat Kumar and Prithu Maharaj, because their hearts are so, there is no tinge of impurity, and are all transcendentalists, pure great souls. So therefore, the dialogue between such individuals are sublime and is beneficial for all the living beings. सेतरे उभय बड़ा आनंदित है एवं ऋतुमान जिज्ञासा बा जो प्रश्न प्रश्न रहितला सेति मध्य
सनत कुमार अनंत प्रकाश कले कारण से आलोचना नहीं उभयकर लाभ सहित जगत कल्याण निहित रही। So therefore, our process will be to examine ourselves. Each one of us, we have to learn how to examine whether I am becoming purified, whether my thoughts, my mind, my heart is getting purified, or how the degree of purification, how far one has come up. So that has to be examined every day, every moment. So the fact is that we are, all of us are very, very liable to become very easily angry over a small little thing. हमें समझते सामान्य कथा रे क्रोध होइतबार विशेष संभावना सब समय रे रही। It's like when we ask a young boy, a young devotee, brahmachari, you do this, you do that, but sometimes they are not so voluntarily accepting. They are sometimes they rather try, oh no, I can't do it, or they don't follow. I think the symptoms is very prominent throughout the world. We have seen it. I've seen it that symptoms are that this saying no is more prominent than the symptoms of saying yes, Maharaj, yes, Prabhu, please try, please bless me. So saying that the negative symptoms are more prominent than the positive ones. आमको संशोधन करिया पाई श्रीपाद महाराज और एक उदाहरण दोछंती आमे जो माने समते नवागत भाव रे साधु दर्शन करिबार सुयोग पाइसंती एवं भक्ति मार्ग रे अग्रगति करछंती जेतरा आमको किछि प्रश्न करालछि आमे बाह्य जे परि भाव रे विनय भाव रे हां महाराज मु करिबी चेष्टा करछि देखुछि कहिला मत अंतर मध्ये आम भितर अनेक असंतोष एवं क्रोध आमर अजाणत रे प्रकाशित हो जाउछि एटा सचराचर देखा जाउछि तेनु या आम मान पई एक प्रकार चेतावनी यदि आमे ग्रहण करिबो चेतावनी बोली मारे ग्रहण देबो ताला समस्त विषय मंगल हो। So these are, we can say, so this is a symptom of not very pure heart. Mine is not, still needs to be further purified. Purification is necessary. That so instead of saying saying no, then I should voluntarily come out with this idea. Yes, my dear such and such, so please bless me so that let me try. I will try. Please bless me so that I don't know anything, but please give me the intelligence so that I can try it. So that we should come out something like that. So बाहर को हमें अनेक समय रे बड़ा विनय भाव प्रकाश करे मध्य अंतर मध्य रे हमर से प्रकार निर्मल भाव रहु नै एटा निश्चय हम पक्षरे मंगलजनक नुहे तेनु जेतबेला हम किछि निर्देश दिया जाउछि हम ताको निष्कपटतार सहित सरलतार सहित ग्रहण करिया उचित एवं सरलता सहकारे प्रकाश करिया उचित जे कुतरे मोर एटा भूल हेछि किंबा मु आपनकर आशीर्वाद वा निर्देश पाइले चेष्टा करिबी निजे संशोधन करिया पाई एभଳି मनोवृत्ति मध्ये हम सृष्टि हेतु दरकार। So in this way, if we concentrate on purifying our mind and heart by this chanting and following the regulative principles and following the discipline, it's called austerity, temple programs, then the process, by this process, that and by sincere prayer and by sincere this mood of serving, so this will cleanse the heart, in such a way that to the degree that one will make rapid progress in the journey of Krishna consciousness. Krishna Chaitanya Mahaprabhu agati kariya pai amara mandir mane अनेक प्रकार कार्यसूची प्रकृतरे दैनन्दिन जीवनरे बा प्रति मुहूर्तरे अनुष्ठित होछि जोतिर हम समस्त अंशग्रहण करछन्ति से समस्त कार्यरे अंशग्रहण करिवा समय आत्मा अनुध्यान बा निजको लक्ष्य करिकि मोर निजर उन्नति अवनति बा चेतना को अग्रगति लक्ष्य करिकि यदि आमे से समस्त कार्यरे निष्ठा सहकारे से समस्त अनुष्ठान मानके जोग देबो एवं ताको कार्यरे परिणत करिया पाई चेष्टा करू ताहाले हमर जो पवित्रता सृष्टि हमर कथा हम भितरे चार फଳରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଚକ୍ର ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଦିଗରେ ଆମର କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମ ଭିତରେ ଏକ ସରଳ ଏବଂ ନିଷ୍କପଟ ମନୋବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ରହିବା ବା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର।
So this cleansing of heart is essential for both the speaker as well as the audience, the listener. It's essential for both. मन एवं हृदयर पवित्रता वा परिच्छन्नता वा दिव्यभाव सृष्टि वा उभय श्रोता एवं भक्तन ପାଇଁ विशेष भावना दरकार. Here Prabhupada is giving this example that before Prabhupada went to America, the Western world, there were many other sadhus from India, so-called sadhus, and they were speaking, but here Prabhupada is saying, mentioning that there was no devotee of Krishna made. There are so many the sadhus went overseas, even before Prabhupada, but Prabhupada is here just mentioning that no devotee of Krishna was made, although Bhagavad Gita was presented, because the speaker had a different intention. And similarly, the audience was not trained properly. So therefore, no devotee was made. But you see, when Prabhupada went to America, because with the pure-hearted and presented Bhagavad Gita as it is, although and he went against so many odds, so many uncertainties. Even our Mataji Sumati Maharaj say, Swamiji, don't go to America. What do you do there? Nobody will listen to you. Because you say, stop meditating, then stop drinking alcohol, then stop smoking, and stop doing all this improper mixing with men and women. So nobody will listen. Who will listen to you? And you are too old. Don't go there. So at the beginning, Prabhupada was discouraged by Mataji Srimati Maharaji. But Prabhupada, because of pure and clean heart, and with the great yearning how to please the order of his spiritual master, Bhakti Siddhanta Prabhupada. So Prabhupada begged, and then ultimately Mataji agreed. Yes, Swamiji, if you are so dedicated in your purpose, all right, please go, as I will arrange. In this way, Prabhupada sailed for the United States. श्रोता एवं वक्ता उभय हृदय ବା ସରଳତା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିବାନ ମହାରାଜ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି. ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଆମେରିକାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବତଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିନଥିଲେ. ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବତଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଭଳି ଅନୁଭୂତ କରିଥିଲେ ସେ କଥା କେହି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ. କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଯଦିଓ ଜୀବନର ବଡ଼ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଅତି ବୟସ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେରିକାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ସେଇଭଳି ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ସେଇଭଳି ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମେରିକାକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବତ ଭାଗବତର ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା ଏବଂ ଅନେକ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ନିଜ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଅନୁଭୂତ କରିକି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିକି ଜନସମାଜରେ ଦେଖାଦେଲେ. କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ବଡ଼ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି. ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମେରିକା ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନଥିଲା. ସେ ସୁମତି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଖଣ୍ଡେ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଟିକେଟ ତାଙ୍କ ସେ ଗଳପୁତ୍ର ଜାହାଜରେ ଯିବା ପାଇଁ. ସେତେବେଳେ ସୁମତି ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣ କାହିଁକି ଆମେରିକା ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ମଦ୍ୟପାନ, ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ, ଏ ଯୋଉ ସିଗାରେଟ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଅବୈଧ ଯୌନ ସଂଶୋଧନରେ ତମତ୍ତ ଭାବରେ ଲାଗିଛନ୍ତି. ଆପଣ ଯଦି ସେଠି ଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ? ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଆପଣ କୃପା କରି ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଏବଂ ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁସାରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଯାଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହିବି. ଏକ ଦିଗରେ ସୁମତି ମହାରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ନିଷେଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କେବଳ ଟିକେଟ ଦିଅନ୍ତୁ. ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କଲେ. ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନିକଟରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେରିକା ଯିବା ପାଇଁ. ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ହେତୁ ସେଠାରେ ସେ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମାବେଶରେ ସମବେତ ହେଉଛେ ଏବଂ ସେହି ସବୁ କଥା ସ୍ମରଣ କରିକି ଆମେ ନିଜ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରୁଛେ. But now we see that by the blessings of Guru Maharaj Prabhupada, we have thousands and thousands of Vaishnavas, Krishna Bhaktas, all over the world.
not only in the west, in the east, in the north, in the south, all over the planet. Now this is a wonderful Vaishnavas are flourishing in large numbers. This is because of the purity of the purity of heart and also purity of purpose. So in this way, the Supreme Lord Sri Krishna and Gauranga Mahaprabhu so blessed Guru Maharaj Srila Prabhupada. Because of that, there is a wonderful this Vaishnavas community are growing in great numbers today. अनेक कृष्णकर अनेक भक्त सृष्टि होइछन्ति एवं सेमानी हजारजन संख्यारे भक्तिमय जीवन अग्रगति करुछन्ति एही भावरे परमेश्वर भगवान कृष्ण एवं गौरांग महाप्रभुको आशीर्वाद श्रील रूपाजिंद महाराजका जरियारे समग्र पृथ्वीरे अगाडि बढुछि एवं एही आन्दोलनरे जो माने अंशग्रहण करुछन् सेमाने निजको धन्य माने करुछन्ति सेमाने निश्चय भक्तिमय मार्गरे भक्ति जीवन मार्गरे जो साधना जो रस रहिछि ताको उपलब्ध କରିବାକୁ चेष्टा କରୁଛନ୍ତି ତାहाले भगवान कृष्ण का कृपा गुरुदेव कृपा आमे समझते कृपा जी महाराज के जरिए लाभ होते। So therefore we have to be extremely grateful that Prabhupada, Guru Maharaj Srila Prabhupada has created this institution, or you can say this society, this platform, how to learn, how to cleanse, how to learn cleansing the impurities collected for thousands and thousands of years, so that one can become come to the pure platform and then be ready, prepared to return to our natural home, the spiritual world. श्रीपाद महाराज आम समस्तको आमे जा श्रवण कले सेठी को आम जो अवस्था सृष्टि होता से विषय कहउछन्ति जे वर्तमान ताहारे आमे श्रीमद प्रभुपाद महाराज प्रति आम जो हृदय कृतज्ञता से कृतज्ञता प्रकाश करबार कथा कारण से आम पई एक परिवेश सृष्टि करिसन्ति से आम पई एक गृह सृष्टि करछन्ति पृथ्वी रूपे गृह जो हम समस्त वास करि पाइबा आनंद रे एवं सेथिरे वास करिबा फलरे आम जीवन जो साधना मार्ग रे आमे सुंदर रूपे सुचारू रूपे अग्रगति करि पाइबा ता फलरे आमे हमर एक स्वाभाविक गृह अछि नित्य गृह अछि आनंदमय गृह अछि जो आमे सहजरे टेकि बैठो। So by hearing Srimad Bhagavatam, the narrations, the dialogues among great personalities, so by hearing, it's called Nityam Bhagavata Sevaya. That's by this Bhagavat Seva, regularly, all the time, eternally. Nityam means eternally. We do not have Bhagavat Sapta is not only for 7 days, but Nityam Bhagavata Sevaya. Our process is Nityam Bhagavata Sevaya. By hearing Srimad Bhagavatam eternally, all the time, that all the inauspicious things will be removed from the heart. In other words, the heart will become completely cleansed and purified. So therefore, we are Prabhupada introduced this culture of this Srimad Bhagavatam class every day. It's not only for for 7 days, but every day, every moment. So by this culture, that our impure hearts will be cleansed. साधु सम्मेलन साधुमान मध्य संलाप भक्त आध्यात्मिक गुरु एवं जगतरे तार प्रभाव सम्बन्धरे अनेक कथा कहवा परे श्रीपाद महाराज श्रीमद भागवतमर गौरव विषय किछि कहउछन्ति। श्रीमद भागवतम श्रवण करबा परे ए समस्त कथा संभव होइछि। श्रीमद भागवतमरे भक्त एवं साधु संत मानकर गौरव गान कर जहाँ श्रवण करे आम जीवन में अनेक कर्म सदा महिला भूतरे जमी रही सेटा दूर हम एवं सेटा दूर होय फल कौन हम ना आम जीवन में आम सुष्ठु भाव में अग्रगति करबा किंतु यही बारे नित्य भागवत सेवाया विषय अनुध्यान करिवार कथा बा चिंता करिवार विषय जदियो भागवत श्रवण फल भागवत सप्ताह में जो भागवत श्रवण होछि ता फल जदियो किछि जन समाज रे चेतना सृष्टि करा जाछि किंतु नित्य भागवत सेवा बा नित्य भागवत श्रवण स्वतंत्र प्रभाव जीव जीवन रे सुंदर भाव रे परिलक्षित होइछि जहाँ श्रीमद भागवत में लिपिबद्ध होइछि। But therefore we have to be extremely serious. The serious means
we should be determined. But how you get determined? How you get seriousness? By prayer, by this approach to humility, that my dear Lord and my dear Prabhu, my dear senior Vaishnavas, so please be merciful unto me. I am most fallen, I am most ignorant. Please give me this blessing so that I can develop some qualification to actually listen that this Bhagavat, this is Srimad Bhagavatam, so that I can improve my life. So with that approach, then everything will become, by the blessings of the Lord, will become reality. जो माने निष्ठावान होइछन्ति सेमानक जीवनरे श्रीमद् भागवतम श्रवणर प्रभाव समुज्ज्वल होइछि विशेष भावरे कार्य करैछि तेणु निष्ठावान होबा पाई हमको प्रार्थना କରିବାକୁ पड़िବ परमेश्वरଙ୍କୁ चिंता କରିବାକୁ पड़िବ प्रार्थना କରିବାକୁ पड़िବ हे प्रभु मोर किछि योग्यता नाही मु किछि जानि मु किछि ग्रहण करि परने अशेष जन्म धरिकी मु अनेक अपराध करिथातु मो जीवनरे ता प्रतिफलित होई परने ता छवि मो हृदय अंकित होई पर नाही जदि आम एभली भाव प्रार्थना करूँ प्रभु परमेश्वर कृष्ण पदारविंदे एवं जदि आम भक्त सज्जन मान प्रकृत में सम्मान प्रदर्शन करूँ से कृपाभिक्षा करूँ ताहले यही श्रवण अधिक भाव में आम जीवन में प्रतिफलित हो एपरिक खूब कम समय जड़े जड़े ये दिगरे बहुत अग्रगति कर When Sanatana Goswami met Gauranga Mahaprabhu, so Sanatana Goswami presented this to Gauranga Mahaprabhu, saying that, my dear Prabhu, my dear Lord, many people tell me that I am a great scholar. I am a Sanskrit Pandit. I am a scholar, but I do not know anything. I do not know what is the goal of life. I do not know what is my ultimate destination. Although people call me as a great Pandit, but I don't know. I don't know anything. I am very ignorant. So please enlighten me. So in this way, when Sanatana Goswami was presenting this in this way, so Gauranga Mahaprabhu was replying, saying that Jiver Swarupa Krishnera Nityadas. So the position of the living entity is to recognize that he or she is the ultimate, the eternal servant of Krishna. So, but that has been forgotten by majority. So therefore we have to bring that knowledge in our regular practice. श्रीमद् भागवत श्रवण महिमा एवं निष्ठा निमित्त प्रभु पदारविंदे प्रार्थना करे आउ के बड़ा गुण बा बड़ा आवश्यक गुण विषय श्रीपाद महाराज कहउछन्ति ता होछि विनय भाव रे साधु मान निकट रे जिज्ञासा करियो पड़ियो एक उदाहरण देके महाराज कहउछन्ति जेतबेले सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु वृंदावन रे भेटले सेतबेले से बड़ा विनय सहित कहिले मते समस्ते बड़ा पंडित बोली कहउछन्ति किंतु मु बुझि पारनु मु किभଳି पंडित मु चिंता में गद्दीभूत होछि किंतु लोक माने मते पंडित कहले मते मु जानि मु किछ जानि नाही तेणु आपण को पादरे मु आश्रय पड़ुछि जे काहे कि जगत रे जीव एत दुख पाउछि मु एत दुख पाउछि से विषय मते आपण कृपा करिके किछि कहिबे तेणु महाप्रभु कहले जीव तार आनंदमय स्थिति अछि तार रक्षा करि पारिबो जदि कृष्ण का सेवा रे रत हुए काहे कि जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास कृष्ण दासत्व कृष्ण को सेवा करवा प्रीतिपूर्ण भाव में सेवा करिया पई जदि जीव प्रस्तुत हुए ताहारे तार जीवन रे मंगल है एभली भाव रे चैतन्य महाप्रभु से मध्य श्रीपाद सनातन गोस्वामी को वृंदावन रे शिक्षा देते सेतिरे निहित रहिछि विनय भाव सनातन गोस्वामी कर विनय भाव पई महाप्रभु अल्प समय मध्य तांको एक सार कथा कहले जो काम समस्त जीवन मध्य सार कथा बोले हम ग्रहण करछु जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास. So this mood of humility and this spirit of devotion. So in that mode, when Gauranga Mahaprabhu in his Sikshastakam that we chant every day, that Trinadapi Sunicena, Daroreva Sahisnana, Amanina Manadena, Kirtaniya Saraharihe. So here, Trinadapi Sunicena.
One must be humbler than the straw on the street. Trina is a straw, this is grass. See the grass, when you walk over the grass never protests. It's always in a great humility, spirit of humility. And Trinada Esuni chain, Tarori Basay, Taror means the tree, the plant. So the Taror is like, in places like when there is a lot of snow, like in America and in the cold countries, say during the month of December, January, you see there is heavy snow. And in that, you see they have no leaf. In all these trees, I have seen it in America, especially in Buffalo, in New York. Heavy snowfall. That the trees there's no leaf, but the branches are there, the trees are alive, but the snows is like little jewels are hanging on the branches, and there you can feel it. You can feel, this poor tree is suffering because it's such cold climate, but the tree is not protesting. So in this way, this tolerant, such a great spirit of tolerance. So because of that, as Gauranga Mahaprabhu says, so when one develops that type of mentality or this spirit of humility and tolerance at that point, and one more point, 3 points. Another point is amanina manadena, that devoid of all sense of this ahankar, this false conception that I am a big man, I am very rich, I am most handsome, and everything is under my order, I am the owner, I am the master. This type of ahankar, so this is amanina manadena, devoid of all such ahankars. Only in those conditions, one can develop this spirit, the culture of, what is that culture? Kirtaniya sada harihe, that one can always chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is the formula. निष्ठा एवं बिना भाव विषय अधिक किसी कहलो जिन श्रीपाद महाराज कहते जे शिक्षक महाप्रभु जो शिक्षाष्टक रचना करछन सेथिरे तृणादपि सुनिचा भाव कथा कहवा जायछि आमे केते बिना हवा एक हम सदा ज्वलंत उदाहरण रातर कुपाकिए पड़िछि जदि के चाली जाउछि ता ऊपर तार किछ कहिबार नै प्रोटेस्ट करिबार किछ नै मासे किछ विद्रोह कर नै एवं वृक्ष माने रहिछन्ति तृणादपि सुनिचा भाव एवं करोड़िव सहिष्णुता बोली महाप्रभु रचना करछन शिक्षाष्टकरे तृणापरि घास पत्र परि रास्तारे पड़ी रहिबा र बिना भावटाको आमे ग्रहण करिया पई कुआ जाउछि शिक्षा दिया जायछि एवं करोड़िव सहिष्णुता वृक्ष परि सहिष्णुता पई कुआ जायछि वृक्ष जत्र तत्र अछन्ति शीत काकर वर्षा बरफ तुषारपात सब सहाय करछन्ति ता सत्ते यथा संभव जीव को बंचिया पई से माने जोगौछन्ति जदि के ताकि काटी दउछि से माने किछि प्रतिवाद करूनांति किंबा जदि सेमान को ऊपर तुषार करका पाप होछि ताकु सब बहन करि से माने दंडायमान हेछन्ति किछि आपत्ति अभियोग काको करूनांति आमे जेतरे तक देखो आमे ए वृक्ष केते हतभागा वृक्ष केते दुख रे माने अछन्ति नै भाबुछि किंतु महाप्रभु मत हमको सही बड़ी भाव रे सहिष्णु भाव रे कहउछन तार कारण जदि जने सहिष्णु न हुए जागतिक उर्मी माला रे जदि उद्वेलित થઈ જાય ताहाले तार अस्तित्व हेतु भगवत प्रदत्त आशीर्वाद बा साधु मानक द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद से ग्रहण करि परिना जदि ताको सब ग्रहण से करिकि अभिषेक भाव रे रहि कि सदा हरि कीर्तन कर ताहाले महाप्रभु मते कहउछन कीर्तनीय सदा हरि ताहाले कोन हो ना प्रकृति रे से योग्य हबो बा निज को निज भीतर पात्रता सृष्टि हबो साधु कृपा कृष्ण कृपा ग्रहण करिकि निजर मानव जीवन को समुन्नत करिया सफल करिया. So therefore the only qualification therefore necessary to develop that type of understanding or this culture or this type of our daily service, daily activities, that we have to always think that yes, my heart is very impure. I have to cleanse. I have voluntarily accept that my heart is still there are traces of impurity or other impurities. So we have to always think about it, how to cleanse our heart.
then the sublime quality of all his devotional quality will begin to manifest. हृदय दिव्य भाव सृष्टि नहेले जने भगवान को सेवा करि पारिबो नाही ते बिना भाव जेभଳି बिना शिक्षा करिया पाई जेभଳି शिक्षा दिया जायछि तार आवश्यकता यथेष्ट रहिछि कारण दम्भ गर्व अहंकार मु बड़ धनी मु बड़ मानी ए जो गर्व दम्भ अहंकार ए सब हृदय को बड़ अपवित्र कर दिए अपरिष्कार कर दिए जहा फल रे जीव निजे दुख आउथिलो जो जहा करके से मार्ग से कर्म से लिप्त हो सेति ई सब गर्वदम्भ अहंकार को त्याग करके बिना भाव रे वृक्ष पड़े तृण पड़े सहयोग करके जेतला आमे जो सेवा हमको दिया भगवान का सेवा को ताले प्रकृति से सेवा भगवान पर पहुंच पाइबो एवं आमे तो उपलब्धि करबा जे प्रभु परमेश्वर भगवान से सेवा को ग्रहण करछन तथा कोन हबो ना हमर उपलब्धि जे मो जीवन रे मो अग्रगति करूछि कि अवनति करूछि त बुझिबा पय सहज है एवं निज को दर्शन करे जाय आमे जानि पारिबा जे प्रकृति रे आमे जो मार्ग को आसीथिले से मार्ग रे हमर निष्ठा हेतु हमर ग्रहण करिबार मन प्रजे प्रकृति रे आमे गुरुदेव पादाश्रय करथिले ताको शिक्षा ग्रहण करिसंती एवं धीरे धीरे आमे क्रमोन्नति पत्र अग्रगति करूछंती. So this chapter in the fourth canto, this chapter, the dialogue sangbat between Prithu Maharaj and Kumara, especially Sanat Kumar, actually this contains the whole essence of the whole spectrum of this Krishna conscious program. श्रीमद् भागवतम तत्वसत्वंद ए जो 22 अध्याय पृथु महाराज एवं चारि कुमार के सहित जो सम्मेलन होला बा जो मिलन हेतला सेटा श्रीमद् भागवतम रो माने निष्कर्ष बोली कहिले किछ अतिरिक्त होनी कारण समस्त श्रीमद् भागवतम रे जहा दिया जायछि ए सनत कुमार एवं पृथु महाराज सहित मिलित से समय अनेक और साधु संत उपस्थित रहे से समागम ही श्रीमद् भागवतम रे निष्कर्ष बोली कहिले किछ भूल हो. Especially if we continue this in the next few verses, especially in text number 24, that will come the letter, there are the special qualification of a devotee, how to become a devotee of Lord Krishna. So there are, these are also mentioned. So here, Sanat Kumar mentions there are 8 qualifications of how to become a devotee of Krishna. And in this way, of course, there are the other instructions, but these guidelines or these instructions are extremely important for all of us. आठटी विषय पर बड़ जोर दिया जति आमे ताकू बुझिबा को चेष्टा करू तारे प्रकृतरे हमर ई भक्ति जीवन मार्ग रे का वृद्धि करा पई ता एक स्तंभ बड़ी कार्य करू. But to develop all these qualifications, that the first and the foremost is a cleansing process, that unless or building the foundation, this is how to prepare ourselves so that we can enter into the world of this prema bhakti, learning how to develop this bhakti, this pure devotional spirit. Prema bhakti is ultimately our duty is to develop the Krishna prema, how to develop love of the Supreme Lord, Sri Krishna. But unless one prepares, unless we cleanses our heart, impure heart, unless we build the proper foundation, it may not be so easy. It is rather, it will be rather difficult, and it may not be very lasting. But therefore, in order to have a lasting, understanding of devotional life, in order to have the ultimate understanding of what is the ultimate goal of life. It's like Prithu Maharaj was asking, what is the goal of life? So to answer that, so we have this cleansing process is most vital, is extremely important. एवं भक्ति मार्ग रे अग्रगति करा के तार गोटे मूल जिंस होची निज चेत बा निज हृदय दर्पण को परिष्कार करबा निर्मल करबा निज हृदय रे जो महिला जमी रहची से महिला सब कोन ताक देखिबा एवं से सब महिला को किपरि गुटे गुटे दूर करा जाई पारे ताकि जते हम से उडी भाव रे करि परिबा तार सेटा हम भक्तिमय जीवन भित्ति भूमि ताको आश्रय करि के आमे भगवत भक्ति मार्ग रे भगवान के सेवा मार्ग रे अग्रगति करिया पे सुजग पाइबा और समस्त सुजगर व्यवस्था भगवान कृष्ण को कृपा सृष्टि किंतु आमर प्रचेष्टा मार्ग रे निजर हृदय को
ପରିଷ୍କାର କରିବା ନିଜର ହୃଦୟର ମଇଳାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ। So we have to accept therefore that since I have come to this Krishna consciousness mission, so this we have to accept that this is not ordinary thing, that by the blessings of the Supreme Lord Sri Krishna and also by our own previous karmas that we perform in many lifetimes, we may not remember, but at least we had this desire that my dear Lord, we are fallen in this material world, so please enlighten me so that I can get out of this dangers of this material world. So we have begun our journey that in coming to Krishna consciousness to revive our original, that the consciousness. Therefore, because of that, we have to take extremely seriously, and we should never think about going back again to the material world. That we must be fully convinced. ଆମର ଅତୀତ ଜୀବନ ମାନଙ୍କରେ କିଛି ସୁକୃତି ଥିଲା ବା ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା, ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କିଛି ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିକି ସାଧୁମାନଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିକି ଆମେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭ୍ରମଣ ସଂଘକୁ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ହୃଦୟ ଦର୍ପଣକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବାଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ କଥା। ଆମେ ଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭ୍ରମଣ ସଂଘକୁ ଆସିପାରିଛନ୍ତି, ଏକ ସୁଯୋଗ ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ହୃଦୟ ଦର୍ପଣକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମର ମନୋସ୍ଥିତି ନ ରହେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କରୁ, ତାହେଲେ এই যে ভক্তি মার্গরে নিজের জীবনকে সফল করা মার্গরে বিশেষ কিছু আমি লাভ করা নাই। তেণু জীবন প্রচেষ্টা রয়েছে বা আকাঙ্ক্ষা রয়েছে সে চিজকে ফেরি যাই পারিব, এটা সত কথা সম্ভব, এটা সবুলে ভগবানের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু জীবন পক্ষে বড় আবশ্যক কর্ম হচ্ছে নিজের হৃদয় দর্পণকে পরিষ্কার করা। মনের মহিলা আছে, সে মহিলা কিপরি আসিছি, কিপরি রয়েছে এবং কিপরি দূর হয়ে পারিব, এই বিষয়কে তীক্ষ্ণ অনুদান সহিত सफा करिया पाई मा दूर करिया पाई चेष्टा करिବାର आवश्यकता विशेष भाव ରହିଛି। So therefore this chapter of Srimad Bhagavatam is extremely important for all of us how to actually get this knowledge. ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ବା ବଡ଼ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିବା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା and apply it in our daily life, in our daily devotional life. ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଆମ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। So therefore sometimes I use this word, especially speaking among the scholars and colleges and universities, that what the Krishna consciousness means, that we are practicing called applied spiritual technology, spiritual science and technology, application in our daily life, practical application of the teachings of Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam is called applied spiritual technology, just like applied physics, applied spiritual physics and chemistry. श्रीपाद महाराज कहते जे से जो प्रचार कार्यक्रम मध्य से जो स्कूल कॉलेज कि यूनिवर्सिटी जाऊँगी से कृष्ण चेतनार व्याख्या कर कहते भगवद गीता और श्रीमद भागवतम निज जीवन व्यावहारिक व्यवहार निज जीवन में किपरि व्यवहार करे जपरी आम एप्लाइड फिजिक्स व्यवहारिक दृष्टि फिजिक्स की व्यवहार करुचे केमिस्ट्री की व्यवहार करुचे अनेक सब रही टेक्नोलोजी रही विषय विद्या रही वैषयिक विद्या रही तार व्यवहारिक दिग किपरि अच्छी व्यवहार करुचे से भाव में कृष्ण चेतना को निज जीवन में व्यावहारिक दिगरे किपरि शिक्षा करा जाय परिबो एवं किपरि प्रयोग करा जाय परिबो प्राथमिक विद्या भाव में से कथा से समस्त विश्वविद्यालय और शिक्षा क्षेत्र मान करे से शिक्षा विषय मान को बाद में शिक्षा दूतन से मान से पहुंचंदी। Our Prabhupada Guru Maharaj he felt that this modern world is controlled by or influenced, greatly influenced by science and technology. So therefore he felt that Krishna consciousness, if it can be presented in a scientific and in a spiritually oriented technological principles, conceptions using this language, if we can present it that many intelligent boys and girls, especially who are in the science and the engineering fields, so they will be attracted
and they will come and join the movement and become part of the Hare Krishna mission. श्रीमद् प्रभुपाद जी महाराज उपलब्धि करथिले जे जेहेतु आधुनिक जीवन लोकमाने विज्ञान एवं नाना प्रकार विषय प्रयोगात्मक विषय विद्यारे बड़ा आग्रह प्रकाश करी क्षेत्र अग्रगति करछन्ति तेणु कृष्ण चेतना को जदि सेही भली भाव प्रयात्मक भाव एवं व्यवहारिक विद्या भाव शिक्षा दिया जाए ताले इंजीनियर माने डाक्टर माने एवं जो माने विषय प्रयोग सब करछन्ति टेक्नोलॉजी को व्यवहार करछन जीवन रे सेमाय मध्य को एक व्यवहारिक विज्ञान भाव प्रयोगात्मक विज्ञान भाव ग्रहण करेंगे एवं से आग्रह प्रकाश करेंगे अधिक गति शिक्षा करने जो जगत में जो परिवर्तन आसवा चेष्टा होइछि सेना प्रकृति रे परिवर्तन आइबा. So today we are speaking in here called Indian Institute of Management in Bhubaneswar. It's one institution. I've never been there, but I've been invited to speak at 3 o'clock. So I have to make a little preparation. I'm speaking on ethics and management, how to manage. So this is an important institution here in Bhubaneswar, and also in the evening we are going to Cuttack. We are speaking Bhagavad Gita at 6 o'clock in Cuttack, and so this is the program. And tomorrow I'm leaving at around maybe about 11 o'clock in the morning. I'm going to Tirupati, and so we'll end here. Maybe tomorrow also I can continue this Bhagavat. I want to speak something about this, maybe 24 about the qualification of how to become qualified to become a devotee of Krishna. So as instruction continuing by San Kumar to Prithu Maharaj. आज अधिवेशन समाप्त करबा पूर्व आम समस्त को श्रीपाद महाराज दुईटी माने कार्यक्रम संबंध सूचना दउछन्ती से आज भुवनेश्वर रे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रे तीनटा समय रे ए विषय श्रीमद् भागवत व्यवहारिक श्रीमद् भगवत व्यवहारिक दिग विषय रे सेटिका जो शिक्षा करछन्ती स्टूडेंट एवं अध्यापक छात्र एवं अध्यापक अछन्ती सेमान मध्ये कहबा पई तांको आमंत्रण करा जायछि आज संध्यारे मध्ये आमर कटक रे जो केंद्र अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भवन संघ चलछि सेति मध्ये ए विषय रे कहबा पई तांको आमंत्रण करा जाय सेति कहि कहबे एवं काली श्रीपाद महाराज तिरुपति यात्रा करछन्ती तांको जीवन विषय भगवान सेवा पई समर्पण करछन्ती एवं सिद्धगिरी तांकर योजना किबळी भाबरे नित्य नैतिक भाबरे प्रतिदिन रहिछि सेत्रा हम सूचना देणी या परे हम पई एक वार्ता हला जे प्रभु रे हमें मध्ये हमर दैनिक जीवन रे हमें दायित्व कर्तव्य के बंचिले मध्ये भगवान कृष्ण केंद्र करिके या साधु संत मानक पदांक अनुसरण करिके मध्ये यथा संभव चेष्टा करिबा तथा एई भली सब जो योजना बा जो प्रकार प्रोग्राम चालिछि जो प्रकार कार्यक्रम होइछि सेत्र जोग दवा पई एवं परवर्ती श्लोक मानकरे जीवन रे कोन सब अति दुर्लभ जिंस शिक्षा करिवार कथा अछि से सब हमें पढिबा शिखबा किंतु हमें केते दूर से सुযোগ पाइबा महाराज को श्रवण करिबा अवश्य हमें ताकर व्यस्त कार्यक्रम भीतर सेटा कहै जाय पारु नै किंतु आज अंतत दुईटी कार्यक्रम एवं काली मध्ये जदि आगे तक पब्लिक सुनि पारे बने तीनटी कार्यक्रम विषय सूचना देके महाराज आज अधिवेशन को समाप्त करिया अपनी इच्छा प्रकाश करछन्ती. जय गुरु महाराज प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, कृष्ण बलराम की जय, गौर प्रेमानंदे स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज की जय.